evening friends. Today I am just showing you how this auto buying and selling signal will comes in this indicator. For that purpose I am just going live so that you can understand how this indicator works for you. Okay. This is a new indicator which you have developed. Okay, so whichever you want you can use. There is nothing like that this is good, that bad. Almost all the rules are same. Only feel good, easy method I am trying to give you. See here, the buy came here. You see here, there is a buy. Trailing started from here. Okay. So this is the first target. Okay. So one entry level is 1. Second is first target. Third is second target. Fourth is third target. Okay, like that. You can trail. As long as below this blue line, you can keep buying. As long as below this line, you can keep selling. Okay, but only thing you should avoid selling at this place. Only you should take long entry when this is above these two green lines. Okay. Now if you see ADX is weak, ATR is neutral, and RSI is in buy zone. So it may go up to 6643, and today it has reached around about 6550 crude oil. Maximum it might go up to here and it might reverse from here because this is the previous higher high. So let me put mark like this. Here. It crosses above this, then this is the place. After that it might come back to this level. Okay. So this is the selling.
So this is what actually happening now in crude oil. So now I just want to talk about the Nifty, which happened today. What happened today? Okay. So what you would have done? Okay. So if you see for Nifty, I use our indicator. Okay. So let me share the Nifty settings and hope I am using Nifty here or Sunset. Let me check the Nifty. Okay. See, once it opened in the morning uh, above the VWAP, okay, so it gave the buy signal in the morning itself. And as you all know that when it crosses the daily resistance, it is a buy. And the target is very simple, the red zone, whereas weekly resistance also there. If you see exactly from weekly resistance, when it touched this level, I said book the profit. Okay. So 24,300 call we took and we booked the profit here. The price went from 50 rupees to 95 rupees. Okay. Then it's up to you whether you want to take put or not, because we are done for the day. Okay. So until unless market opens above this 24,374, it is not going to go up. Okay. So this is the dead zone. Okay, from here anytime, suppose if Monday opens market up to this level also, it's a sell zone only. Okay, so until unless it crosses 24,380, so market will not going to go up, that's for sure. Okay, so now below this, if you see here 24,180, so below the daily resistance, again short entry came. So if you have not taken short here, at least you would have taken here for a target of 24,053. Okay, so again it came to the buy zone. Exactly, it took the support at the buy zone and it is holding here. If Monday gap up or gap down, gap up means here, gap down means here. Okay, there are multiple chances. Weekly support or weekly support, any of these levels also, it can take the, if it gap down over here or here, it will bounce back. Okay, so that is the scenario for Monday. Accordingly you can plan. So still as a hero zero trade, you would have taken call at this level for Monday, Tuesday. Anyway, we have 3 days holiday. Premium will be decayed. Okay, same setup. If I go with this thing, if you see the how level have been, see this level. Okay, so when this is a green, you would have taken long entry anywhere here. Okay, so and you would have booked profit at the red zone. Exit, buy, exit came exactly over here. You see here, from here to here. Then it has not taken a short entry. Okay, so short entry not at all came, I think. Okay, short entry not came in this. Why, I need to check that. Okay, so might be some setting problem. Okay, so yeah, some setting issue is there. So hence short entry not taken. That I need to check from the back end. But this is how it works. So below this red you should take short. Above this line you should take long. Very simple. Okay, so now crude oil also, if you check, so it has reached almost the target which I have marked here. Okay, you see here almost it reached. So from there the reversal came suddenly. It was trying to go up, but due to the target, so it reversed. So now from here it is going to fall up to here. So this is how the system works. This is how the indicator works. If I want to see this in real setting, okay, let me check this.
Let me apply the new indicator. Picture now. Hope. Okay. Now buy, you know the stop loss, buy entry, target 1, target 2, target 3. So we can do settings here 1:1, 1:2, okay, 1:2, then 1:3. Okay, so you see the 1:1 target already hit. Can you see here? Long entry took here, buy, and 1:1 target is hit. So if you keep 1:2 target, then it will be continuing. Okay, 1:2. Just I am showing you how the new indicator is going to work. I have deployed on Nifty. You can use anything. You can use. Doesn't matter. Okay, for crude oil, so you can use that. Main thing is entry. It has to pass. After that, the target. 1:3 I have kept. 1:2, 1:1 target is done. Okay, so 1:1 means like from here to here. So it is a 19 point. Am I right? 659, not 19 point. 9919899. Yeah, 19 point. Okay, so 19 point. Then 1:1 means another 19 point from here. It's very simple. Okay, so that target is done. 1:1 target is done. If he has taken the proper entry, target done. So I have kept 1:2 now. So if the price reaches here, so it might book the profit. Okay, so this is on crude oil. Now, if I check the same thing on other commodities like gold. Gold, let's see any buy sell signals are there. Price which is near to the gold value, that is Sensex. Not working. So there is no signal here. So it has taken long entry here, stop loss hit here. Okay, so after that there is no trades taken in this. Okay, so if I keep the different time frame, it might take 5 minutes. Yeah, so 5 minutes it has taken entry and exited. See, perfect entry, perfect exit. Okay, so short entry also, perfect entry, and profit, one profit booked here. Okay, so like that. You see where it exactly takes the entry, how it books the profit. You see this, all winning. Most of them are winning. Okay. If I see silver, okay, so target hit, closed early, 5 minute time frame, in 3 minute time frame. There is a stop loss hit, I think here. Buy, stop loss hit. Now the buy closed early. See here. Buy took here, but closed early. Okay, so cost to cost. So you don't know where to enter, where to exit. Nah? So now it will automatically tells you where to buy, where to sell. If I see natural gas, no trade in natural gas, it seems. So buy entry, stop, I think it somewhere. Okay, due to that. After that it went up. Once the price crosses above the
buy zones, you can again take the re-entry. Okay, so because your stop loss still will be there. So that you can use your mind and you can trade. That's not a problem. But entry levels are very, very important here. If you see entry, okay, so sell entry taken here. So if price went to below this, you would have taken again entry. But sell reverse means you can take the buy entry here. So buy entry, hit the stop loss, but the buy is giving the profit here. You see here, okay. Sell side stop loss hit because of the smaller stop loss what we keep in 5-minute time frame. So if in 3-minute time frame, it's different. So normally when you keep the stop loss, it goes and hits here. Buy closed early, buy. So stop loss, because our stop loss is very small, hence try to hit. If you keep 1:1 target, definitely it is going to achieve the target. Okay, if I keep 1:1, so all target hit. See, if I am using the Sensex here, I should not use Sensex. What I can use, Nasdaq I will use. Okay. See here also 1:1 target hit. Yes, whichever the price near to crude oil, you can use that. It calculates according to that thing. And if you mix two indicators, you will get double confirmation whether you should buy or not. A perfect buy and this is target, like that you can use both the indicator if you want. I came here only and booked the profit. So as I said, it's supposed to reach here. So from here only it reversed means it is going to come here as per this red angle. Now this is gone. Okay, so now this is not valid. This is already done here. Okay, so hence I will keep this over here. So if above this, it might go up to this level. Below this, it is going to come to low level.
Chinna? Chinna? This is a stock option algo. Okay, so which has booked yesterday 18,000 minus 5,000 last trade. Okay, because I have activated three times yesterday. So last trade it booked the loss. Today I have activated two times. This was the first trade in the morning which booked the profit, and second trade when we reactivated it took lot of trades but booked the profit. Okay. So now this is actually a sideways crude oil. So you see here 3,400 loss is running today. We'll see how it is going to work. Bank Nifty daily income strategy has booked 1,300 rupees. Yesterday 3,000 rupee loss, 2,000 rupee loss. You see this is the loss, and overall in profit. Okay. So this also yesterday booked 1,500. Today 1,300. Okay, and this has booked. This is the ratio. So we'll see. This trade is running put side 0 0. Okay. Also finally under control now. Okay, not good. Scalping, not so good.
Okay. Finally, you see this one. So overall, last 3 days. Okay. This is 998 only. So this is also doing well. Consistency. See here. Okay. All about Algo. And this is another stock option Algo, so which is doing pretty well. You see from 4th of June, entire month it has given total 40,000 rupees profit. You see this is how it has worked. 20% ROI, 20% on 2 lakh rupee investment. 2 lakh rupee investment, 40,000 rupees. Okay. If you remove slippages and taxes and all those things, roughly you can consider around about that comes to 15%, at least 5% you remove that. Let's check the statistics here. Success ratio, average monthly ROI, total 210 trades. 210. So days including today's it will be 220 trades. Okay, if you brokerage and taxes if you calculate, so you will be in profitable trader. Okay. Now see the short activated short side trade. This buy has not exited. Okay, so this is running. The trailing stop loss is activated over here. So you normally you supposed to book profit somewhere here or here. Okay, so just this is better setup I think. Just you need to have a training for this. So you see here buy here, first target, second target, third target, like that.
ಅದು ಮೂರು ಪೌಡರ್ ಇತ್ತು, ನಾನು ನೋಡಿ ರೊಟ್ಟಿ ಸುರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. कल जब बड़ा ट्रेंड था हमने बहुत बड़ा मूव पकड़ा था। अभी आज ट्रेंड छोटा है, लेकिन देखो यहाँ बाई का सिग्नल है, उसका बाई में से कोई एग्जिट नहीं है, लेकिन एग्जिट हमको करना पड़ेगा, रुकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर आप देखेंगे यहाँ तक हो जाता है। ठीक है,
ये नंबर से ये नंबर तक आके फिर वापस चला गया। देखो तो हो सकता है यहाँ से टच करके फिर नीचे आ जाए। इतना मूवमेंट नहीं है, देखो सब वीक है। सेल जोन पे RSI, हाँ ATR न्यूट्रल है, ADX वीक है, VBTS 37 है, वॉल्यूम कम है। यहाँ का आप देखो, एक बार बाई आ गया है तो इसका स्टॉप लॉस यहाँ होता है, ठीक है, इसके नीचे। तो यहाँ से यहाँ तक वो टारगेट हो चुका है। अभी इसमें कोई नया फ्रेश कोई ट्रेड नहीं है। टच करेगा, टच करके फिर देखेंगे आगे होगा, ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा देखेंगे। यहाँ स्ट्रांग सपोर्ट ले रहा है ये जोन से। स्लोली स्लोली क्या कर रहा है ना, लोअर हाई बनाने के लिए कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। का टारगेट का जो सेटिंग है ना, वो थोड़ा दिक्कत आ रहा मुझे। ओके, टारगेट का सेटिंग कुछ करना पड़ेगा अपने को। टारगेट बहुत बड़ा डाल दिया मैंने, ठीक है, इसके लिए वो टारगेट बुक नहीं कर रहा है, ठीक है। तो 20 बेटर है, जो होगा देखा जाएगा, है ना। 20 पॉइंट तो मिलता ही मिलता है।
स्टॉप लॉस जब हिट होता है ना वो थोड़ा चैलेंज होता है, थोड़ा ये स्टॉप लॉस टारगेट डालने का ही बहुत बड़ा दिक्कत होता है। अभी देखते क्या होता है। हाँ, एंट्री लेके अभी तक उतना कम प्रॉफिट में कैसा, वो समझ में नहीं आ रहा मुझे। देखते हैं क्या, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। या टेकन एंट्री, ओके, एक बार 152, हाँ ये जो लॉस हुआ था ना 317 से 305 लॉस हुआ था, 300 पे एंट्री हुआ है। ओके ओके, लाइक दैट। हाँ, समवेयर इट टुक बाय ट्रेड एंड लॉस हुआ था, ठीक है, गॉट इट।
Now selling will come. Crude oil, the high target is stop loss is the higher of the recent one, recent high. This is the stop loss. Okay, so keeping the stop loss, people can take short for the first target, second target, third target, like that. Thank you. Bye.
अच्छी बात है यार, आपने क्वेश्चन पूछा था, मैं उसका आंसर देना मिस हो गया, मैं थोड़ा काम में उलझा हुआ था। मेरा छोटा बेटे का एडमिशन वगैरह चल रहा है, इधर भागो उधर भागो, तो डॉक्यूमेंट अरेंज करो, तो वो चक्कर में थोड़ा बिजी हो गया था। ये उसको और भी थोड़ा करना है, अभी कल तो छुट्टी है ना, कल बैठ के करता है प्रॉपर, वो लाइन दिखना चाहिए कि मतलब स्टॉप लॉस टारगेट जोन प्रॉपर डिस्प्ले होना चाहिए, और डिस्प्ले का मैं करके आपको बताता हूँ। ये टारगेट हो गया, देखो क्रूड ऑयल में जो सेल का टारगेट था हो गया, यहां से यहां तक हमने ड्रॉ करके रखा था ना, हो गया पूरा। बाई साइड का भी हो गया, बाई साइड का मतलब ऑलरेडी हो चुका था, तो इसके आगे ये गया नहीं है, यहां से यहां तक आ गया, ठीक है। तो अभी कोई ट्रेड नहीं है फिलहाल, अभी यहाँ तो ये बाई है, अभी बाई का बाई से कोई एग्जिट नहीं है इसमें, ये बाई का ट्रेड ही चल रहा है, क्योंकि स्टॉप लॉस इसके इधर पड़ा है ना, ट्रेल कर रहा है इसको, अभी ट्रेलिंग का चल नहीं रहा है, तो ट्रेल बहुत दूर रहता है इस जगह पे। फिलहाल कोई बाई की कुछ नहीं करना है अभी, मतलब हो गया ट्रेड, अभी इसका लो ब्रेक करेगा ना, अगर इसका लो ब्रेक करेगा और बहुत नीचे जाएगा क्रूड ऑयल, तब हम सेल के बारे में सोचेंगे। गोल्ड में कुछ मोमेंट है बोल रहा है, गोल्ड में क्या हो रहा है देखते रुको। गोल्ड में अच्छा खासा ऊपर जा रहा है, अरे निकल गया निकल गया, गोल्ड निकल गया। ये 1,48,34 के पास बाई करने को बोला था, एक्चुअली ये जगह मिलता है तो बाई करो बोल के। देखो गोल्ड तो
अच्छा खासा निकल गया। Gold morning, I am telling that where you supposed to buy. So if you get 1,34,000, it's good, but 1,40,000 also good. I said so. Accordingly, it moved from there to here. See, 2,000 points आ गया almost. Is morning 9:15. Morning only I updated. Okay, for the August expiry I am talking about. Okay, if it goes below this level, 1,34,000 is also good buy zone. I said so. Accordingly, it has reversed. Crude oil also going to reverse now. You will see now. Okay, so buy which it has taken here, it exited here cost to cost. You see. Okay. एग्जिट हुआ क्या नहीं, एग्जिट नहीं हुआ है, इसमें सिग्नल नहीं आया लगता है. 6:14, 13, 6:13 exited, 6:14 again call entry took. Okay, again call entry took. Okay. It took the call entry already. Faster than us. See, it's faster than us. See, if I kept target here, it would have booked here. So now again second target. So that is better to keep 20 point target only, not much. 20 point option का target अच्छा होता है. तो देखो immediately buy आ गया है. यहाँ buy किया था, वो buy यहाँ close हो गया, फिर यहाँ से फिर से buy आ गया. ठीक है, stop loss आपका यही बन जाता है. ठीक है, अभी इसका काम खत्म. अभी ये एक्टिवेट हो गया, अभी ये एक्टिवेट हो जाएगा. ठीक है, one will become activated. So again this one will become activated. ठीक है, ऐसे ऐसे छोटा छोटा टारगेट को प्रॉफिट बुक करते जाना है. Jupiter in Pusha. That is the reason why gold is going to go up till 18th of August.
साइडवे, बहुत ज्यादा साइडवे। वहां नीचे जाता है, फिर ऊपर उधर तक आता है, फिर उधर उसकी उसी रेंज में 20-20 पॉइंट, 10-10, 15 पॉइंट पे जो ट्रेड करेगा ना वो अच्छा कर पाएगा। देखो ये सिग्नल वाला इंडिकेटर भी मैं आप लोगों को दे सकता हूँ। खाली खाली क्या है, इसमें टारगेट आपको निकालना पड़ेगा। मतलब यहाँ आपने बाई का सिग्नल आया तो आते ही आप अगर ट्रेड नहीं करना है, आपको थोड़ा रुकना है। अगर रिट्रेसमेंट होता है, कुछ होता है तो अच्छा प्राइस मिलता है तो ये जगह पे आ जाता है। नहीं तो ये जगह पे किधर भी आप एंट्री करेंगे तो एक टारगेट आपका ये बन जाता है, दूसरा टारगेट ये बन जाता है। वैसे भी कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ बाई आया था, यहाँ से एक टारगेट, यहाँ से दो टारगेट। ये भी मैं डालता हूँ आप लोगों को यूज करने के लिए, देखते हैं। अभी यहाँ देखो RSI सेल जोन बता रहा है, यहाँ तो रिवर्सल आ गया। हाँ, ADX वीक बता रहा है। अभी ADX आप RSI वेट करते बैठते थे, आपका इतना पॉइंट मिस हो जाता था, 20 पॉइंट। मैं और 10 मिनट करूंगा, इंडिकेटर दिखाऊंगा, फिर बंद कर दूंगा, ठीक है। सो आई विल पूरा मैं शाम तक, पूरा रात को नहीं बैठूंगा। अभी 10 मिनट खाली रहूंगा मैं, ठीक है। सो 10 मिनट में इंडिकेटर कैसा काम करता दिखाऊंगा, फिर बाद में क्लोज कर दूंगा। हाँ, एंजॉय नहीं, सर दर्द हो रहा है मेरा इसके लिए। पर मैं नींद भी नहीं हो पाया, मैंने थोड़ा सोना था कल, बहुत घूमा मैंने। अभी ये टारगेट पूरा करके हम निकल जाते हैं, कि यहाँ तक जाएगा ये, यहाँ तक भी जाएगा, देखते हैं।
भी ऐसा ट्रेड में आपको एक स्टॉप लॉस रहता है हमेशा, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या रहता है, इसका लो, चाहे एंट्री लिया वही स्टॉप लॉस बन जाता है, ठीक है। तो उसको स्टॉप लॉस रख के आप ट्रेड करते, वेट करने का, कभी भी अर्जेंट पे एग्जिट नहीं करने का। वो भी समझिए यहाँ एंट्री लिया है वो, ठीक है। तो आप समझिए यहाँ एंट्री लिया है तो प्राइस यहाँ तक आएगा, थोड़ा लॉस होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। जब तक कैंडल इसके नीचे नहीं जाता ना, आपको एग्जिट नहीं होना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। अभी जो भी पेट्रोल का भाव बढ़ा हुआ है ना पूरा इंडिया में, वो कब कम होगा? 10,000 से 6,600 पे आ गया क्रूड ऑयल। पेट्रोल का भाव कम कब कब कम करेगा, लोग बताओ। ये होता है, बढ़ना आसान है, उतरना नहीं आसान है। अब उसका डबल ट्रिपल कमाएंगे, उसके बाद में थोड़ा 5 रुपए नहीं, 5 रुपये बड़ा बोल दिए, 1 रुपए 90 पैसे 50 पैसे कम करेंगे। पेट्रोल का गाड़ी यूज ही मत करो, मैं बोलता हूँ पेट्रोल डीजल का गाड़ी यूज ही नहीं करना है। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी।
सो पहला टारगेट भी हो गया। तो पहला हो गया ये वाला टारगेट। अभी ठीक है, अभी कम कर दिया मैंने टारगेट, तभी ये प्रॉफिटेबल बनेगा ये। ठीक है, थोड़ा सेटिंग करने में दिक्कत आता है। जैसे ही यहाँ हिट हो जाएगा मैं सिस्टम बंद कर दूंगा। ठीक है, तो मैं इसका टारगेट होने का वेट कर रहा हूँ।
ये दूसरा टारगेट भी हो गया, ऑलमोस्ट हो गया। ठीक है, ये देखो यहाँ आपको निकल जाना चाहिए। ठीक है, अभी एग्जिट करेंगे तो हो जाएगा। देखो हमने यहाँ से यहाँ तक 50 पॉइंट हो गया, डन। दिख रहा है, ये भी एग्जिट होगा। देखो आप अभी कितना टाइम पॉइंट पे एंट्री लिया था है, एंट्री लिया था 288 पे, 288 प्लस 20, सो ये देखो परफेक्टली यहाँ टच हो गया। ठीक है, सो 50 पॉइंट आप लोगों को कमा के दिया, शॉर्ट साइड में भी कमा के दिया, 2 ट्रेड हो गया।